चलिए जी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. ओके जी व्यूअर्स, मैं आज क्रॉनिकल्स के एक और एपिसोड के साथ आई एम हियर विद यू एंड टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी डिफरेंट पर्सन. Although we talk about Corona, Mr. Corona or Mrs. Corona, nobody knows if it's a Mr. or a Mrs. or maybe in the middle. So, but we'll have some very, very interesting discussion that is going to happen. So, without a further ado, मैं चाहूँगा कि हम ज़रका जी से कहूँगा कि वो खुद अपने आप को introduce कराएं, so that you all know who she is and what we are going to talk about. That, as always, is going to be a surprise. जी अस्सलाम वालेकुम ज़रका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से. आपने मेरा इंट्रोडक्शन का स्टाइल देख लिया जी, तो फिर अब आप मेरी ऑडियंस को इंट्रोडक्शन अपना खुद दीजिए. Well, that's a difficult one, you know, to introduce yourself. जी, my name is Zerka Tahir, और कुछ ना कुछ सोशल सर्विसेज में, कम्युनिटी सर्विसेज में जहाँ तक मुमकिन होता है वो ही करती हूँ. So nothing special to introduce myself with, but that's what I do. कसर नफसी से काम लेने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो ये काम कर रही हैं जिसको हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे, वो एक ऐसा काम है जो शायद हम सब सोचते तो होंगे, लेकिन हम लोग किसी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं, या एटलीस्ट मैंने आज तक नहीं सुना. तो नहीं, मेरा भी बिल्कुल इरादा नहीं था करने का, ना ही अभी भी इरादा है करने का, मजबूरी है. वो आपने फिर शेक्सपियर वाली बात कर दी ना कि some are born great, some achieve greatness, and on some greatness is thrust upon. So where do you lie in this particular thing? Sorry about this. I have absolutely no idea. मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. I have a very short timeline. It's 24 hours a day, और मैं सोच रही हूँ कि उसको भी थोड़ा कम कर लूँ. जो चीज़ें करने वाली होती हूँ वो करती हूँ. अगर एंड का देखिए तो I go by one statement of Jinnah. When I meet my maker, I want him to say, "Well done, Mr. Jinnah." So excellent. I think job description है हमारी कोई. So I just want to do the job well. That's about it. Okay. So अगर मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस को बताइए जो काम आप कर रही हैं, मैं जान के थोड़ा सा आपके मुंह से सुनवाना चाह रहा हूँ, वरना मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी आपसे डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से लोग सुने. Because coming from a man, probably it might not sound that good, while coming from the woman, for the women, is I think going to be more impactful. So, आप kindly खुद बताइए. To start with, I'm not for women or men. I am for every species, and not to exploit anyone or anything. मेन प्रॉब्लम हमारी एक्सप्लॉयटेशन है. तो जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ वहाँ का भी मेन इशू एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे औरत की हो चाहे मर्द की हो. जिसको हम रेड लाइट एरिया कहते हैं, शाही मोहल्ला कहते हैं, उसके करीब मिनी हीरा मंडी भी है. कुछ और एरियाज हैं जो लाहौर से बाहर भी हैं, वो भी इनक्लेव्स हैं इस चीज़ की. So उनकी फैमिलीज के लिए, लेकिन हमारा फोकस मेनली बच्चे है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं है. प्रोस्टिट्यूशन पे बहुत काम हुआ है, बहुत लोगों ने इसको डिस्कस किया है, किताबें लिखी गई हैं. आई एम सरप्राइज्ड कि कभी किसी ने बच्चों पे इतना काम या इतना फोकस नहीं किया, इतनी किताबें नहीं लिखी, इतने आर्टिकल्स नहीं लिखे जितने लिखे जाने चाहिए थे. And maybe it's just because वो इतना सनसनीखेज किस्म की कोई चीज नहीं है, तो इस वजह से शायद इसको तवज्जो नहीं दी गई. तो बेसिकली हमारा मकसद जो है, although in a broader perspective we work in every area, जहाँ पे भी बच्चे हों या जहाँ पे भी किसी को जरूरत हो, लेकिन आजकल मेरा पर्टिकुलर फोकस और जिस हवाले से आपसे बात हुई थी वो यही एरियाज है. और आप तो as far as I know, आप कनाडा में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं. So what happened कि आपने आई और आके all of a sudden एक ऐसा काम पकड़ा जो शायद लोग नहीं सोचते. What was the trigger behind it? कनाडा में मैं आती जाती रहती थी, और मैं कहती होती हूँ कि I can live in Canada but I'm alive in Pakistan. यहाँ पे बहुत कुछ करने को है. वो मैंने कहा मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि उस इलाके में काम करूँगी, ना ही मेरे मियाँ का इरादा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ.
بس کچھ اتفاق کہہ لیجیے. میرا لاہور پاکستان آنا جانا رہتا تھا. بچوں کی افیلیشن بھی یہاں سے بہت ہے, ان کے کزنس ہیں ادھر, سو اٹ وازنٹ لائک کہ ہم کوئی پرماننٹلی کینیڈا میں سیٹل تھے. اس لیے لاہور سے پاکستان سے تعلق تو تھا ہی. دوسرا میرا مین جو تعلق تھا وہ اخوت کے ساتھ تھا, ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ. آئی کنسیڈر ہم مائی مینٹور, مائی گائیڈ. ان کے ساتھ کیونکہ تعلق تھا, اور اخوت ہی کی برانچ ایک اخوت 500 جو ہے وہ وال سٹی میں بنا رہی تھی وہاں پر. اور لاشاری صاحب جو ہیں, کامران لاشاری, ان کا بھی بہت انٹرسٹ ہے کمیونٹی سروس میں. تو وہ ایک بناتے بناتے معلوم ہوا کہ کسی نے کہا کہ جی کوئی بچے ہیں ان کے لیے ٹیوٹر ارینج کر دیں. اینڈ آئی آسکڈ کہ ٹیوٹر کیوں ارینج کرنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ناچنے والی کے بچے ہیں. تو ایک تو کئی دفعہ ڈاکیومنٹس کی وجہ سے نہیں جا سکتے, بٹ مین ریزن یہ ہے کہ یہ بچے صبح اٹھ نہیں سکتے. پاسبل نہیں ہے کہ یہ 8 بجے کی ٹائم لائن فالو کریں, پاسبل نہیں ہے یہ کہ وہ ریگولر کریکولم بھی فالو کریں. تو پھر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ تھوڑے سے بچوں کا معاملہ نہیں ہے, بہت زیادہ. تو اس لیے یہ کام شروع کر دیا. پہلے میں ڈاکٹر امجد ثاقب کے پاس گئی, ان سے میں نے ایک ہی چیز پوچھی کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کروں. انہوں نے کہا نیت کر لی ہے. میں نے کہا جی نیت کا تو پتہ نہیں, مجبوری ہے. تو انہوں نے کہا پھر کرو. سو کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. I just like went for it. میں بات وہی ہوتی ہے نا کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس سے کس وقت کب کام کون سا لے لینا ہے, اور یہ جس کو اس نے معاف کرنا ہوتا ہے, بخشنا ہوتا ہے, جس سے وہ پیار سب سے زیادہ کرتا ہے نا, اس سے وہ پھر ایسے کام لیتا ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا, لیکن وہ اس کو پتا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے وہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے وہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے اس کام میں, کیونکہ اس نے وہ ہم سے پیار کرتا ہے نا, اس نے ہمیں معاف کرنا ہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ اس نے ہمارے لیے بنانا ہے. اللہ کی راہ پہ آسانی ہی آسانی ہے, مشکل نہیں ہے. نہ ہی مجھے اس کام میں کبھی کوئی مشکل آئی. بالکل بالکل, آئی ایگری ود یو. میں اسی لیے پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ جس سے جو کام لے لے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو میرا خیال ہے شاید یہ آپ کا اس طرح کا, آئی ایم ناٹ شیور بٹ یو مائٹ بی ایبل ٹو ٹیل می, کہ شاید یہ اتنا اوپن یا کینڈیڈ انٹرویو شاید اس طرح کے حوالے سے پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا اس پوائنٹ آف ویو سے جس پہ ہم لے کر چل رہے ہیں. تو جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو نہیں, آپ اب تو عادت ہو گئی ہے. عادت ہوگی, بہت سی ایسی ٹرمز کی عادت ہو گئی ہے, بہت سی ایسی چیز کئی دفعہ میں بول دیتی ہوں اور بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کے بچوں اور ہسبینڈ نے how did they take that and how did they support you, or are they like family otherwise? ایکچولی میرے جو بچے ہیں انہوں نے تو it was my kid also who pointed this area out, کیونکہ اس کی بھی بات ہوئی تھی جو ٹور گائیڈ ہے وہاں پہ, اس نے اس کو بتایا تھا. سو ہی asked me کہ ماما اس طرح کا ہے. He's always been interested in working for the community. SOS میں دونوں جاتے رہتے ہیں continuously. So اس کے کہنے پہ I said کہ چلو یہ ایکسپلور کرتے ہیں اس کو مزید. So they have always جب میں پہلی دفعہ شاہی محلے میں اسکول جو بند ہوا تھا اس کو ریسٹارٹ کیا تھا, تو میرے دونوں بچے ساتھ تھے. میں یہ کہتی ہوں, اور اس کے علاوہ اب تو اتنے زیادہ والنٹیئرز آتے ہیں. ایک میں بتا دوں کہ ایک والنٹیئر آئے تھے, تو میں ان کو جانتی ہوں فیملی کو بھی اور سب کو ہی. تو ہی سیڈ کہ میرے ابا نے مجھے بہت ساری انسٹرکشنز دی ہیں کہ بیٹا تم ادھر جا رہے ہو تو خیال رکھنا اور سارا. میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو, ابا جی کو کہہ دو کہ جس زمانے میں آپ جاتے تھے اب ہیرا منڈی ویسی نہیں ہے. میرے بچوں اور جو بہت سے والنٹیئرز آتے ہیں ان کی ایسوسیشن ہیرا منڈی سے ناچنے والیاں نہیں ہیں, گانا نہیں ہے, طبلہ سرنگی نہیں ہے. ان کے ذہن میں ہیرا منڈی کا نام لو تو ان کے ذہن میں 2 سال کی ادن آئے گی, 5 سال کا جگر آئے گا, اور بہت سارے بچے آئیں گے جن کے ساتھ وہ کھیلتے بھی رہے ہیں, جن کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی پرابلم مجھے نہیں ہوئی فیملی کی طرف سے بھی. اور my husband is already into community service and community work, so ان کو تو ویسے ہی کوئی ایشو نہیں ہے. And when you first stepped in that market or in that place, نہیں میں تو کہہ سکتا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا. میں جب آپ اس پریمیسز میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوئی and then you started communicating with these people, what was their reaction?
Did they say کہ what is your agenda? جی obviously ایک پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں, ایک اور بھی گرو ہیں سلطان شعیب صاحب, تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں نے کوئی پروجیکٹ بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا is this what you want for them or is this what they want for themselves. اگر یہ وہ ہے جو تم ان کے لیے چاہتی ہو تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور اگر یہ وہ ہے جو یہ اپنے لیے چاہتے ہیں یہ پھر یہ سسٹینیبل ہے. اس دن میں نے ان کو کہا تھا کہ I feel I've graduated today. تو وہ جو ان کا ایک فلسفہ تھا وہ میرے ساتھ ہے, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی بھی جو ہے کہ آپ نے ایک ڈائلاگ کے تھرو انگیج کرنا ہے. سو پہلے تو دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ پہلے دیکھو کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر لبنہ طیب تھی جن کا تعلق اسی ڈانس اور اس سے تھا, اور وہ کوٹھا تھا جس کا نیچے والا پورشن انہوں نے اسکول میں کنورٹ کیا تھا, اور وہ اسکول بند ہو گیا تھا. وہ سیرا اور گروپ ٹو فرانس کی شراکت سے ایک زمانے میں چل رہا تھا. سو فرسٹ وی ری اسٹارٹڈ دیٹ. تو کیونکہ ان سے, اور وال سٹی اتھارٹی ہمارے ساتھ تھی, ان کے سوشل موبلائزرز ہمارے ساتھ جاتے تھے, اور ان سے ملنا شروع کیا. پھر کیونکہ ان کا ایک پرانا سیٹ اپ تھا, دے ہیڈ ورکڈ ود UN اور اس کے ساتھ انہوں نے کوئی کام شام کیے ہوئے تھے, تو ان کا ایک سوشل موبلائزرز کا سیٹ اپ تھا. I still remember پہلے جب میں ان سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ خواتین مجھ سے بات کر رہی تھیں, ان میں سے ایک تھی جس نے کوئی ڈانس ٹروپے میں انجمن کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, اور ایک مکسڈ سا بیچ تھا. اور ان سے میں نے پہلی چیز یہی کہی تھی کہ اے تے تہاڈا علاقہ ہے, مینوں نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے, تے تسی دسو کہ کی کرنا ہے, جے کرنا ہے تے مینوں دسو, نہیں کرنا تے میں جا رہی. So then that is how we started a dialogue with them. یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی مجھے کچھ کروانا ہوتا تھا تو I know I'm lying but وہ تھوڑا سا کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. I used to say کہ وہ تسی نے کیا سی کہ اس طرح کر لو, تے جدوں اسی بیٹھے سی تے تسی کیا سی کہ اے کر لو, تے بڑا صحیح مشورہ سی, تے میرا خیال ہے وہی کر لینا چاہیے. I mean they wouldn't like اچھا یہ کدوں کیا سی, they would go along with it, and so we got them to do it. Interference بہت کم تھی, جس سے یہ ہوا کہ ایونچولی انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن تھی اس کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اینڈ دے went along on their own. میرا تھوڑا سا وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ بیکاز obviously وہ اس کمیونٹی سے تھے تو they wanted to keep it very locked into کہ وہاں پہ صرف pardon my language کنجروں کے بچے جائیں گے یا مراسیوں کے بچے جائیں گے. By the way کنجر کا مطلب ہے wanderer in the jungle, and مراسی تو ویسے ہی مراس سے نکلا ہے. So اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو I hope کوئی objection نہیں ہوگی. So وہ جو تھا کہ ان سے پھر ایک انہوں نے اپنا وہ جو تھا کہ یہاں پہ کوئی اور نہ آئے, تو I was of the opinion کہ ایونچولی یہ ہوگا کہ وہ کنجران دا اسکول گئے. وہ ایک تھوڑا سا مکس آف کمیونٹی ہونا چاہیے. پلس جس عورت نے اپنے بچوں کے لیے کہا تھا وہ اپوزٹ سائڈ پہ رہتی تھی ٹکسالی کے, which is باغ منشی لتا. It's another locality. During the Zia regime when there was a crackdown red light area پہ, تو بہت سی families had moved from red light area to باغ منشی لتا, which came to be known as mini ہیرا منڈی. یہ بہت اچھا اور پوش علاقہ ہوتا تھا ایک زمانے میں. یہاں پہ بہت لوگ جایا کرتے تھے اور ایجوکیٹڈ کلاس رہتی تھی. But then the properties were bought over by the so-called کنجر families. اور یہاں پہ ایک عجیب سا مکس سا پاپولیشن کا ہو گیا. جو پرانے لوگ رہ رہے تھے کیونکہ وہ کہیں اور جا نہیں سکتے تھے, ان کے گھر تھے اسٹیٹ, جو اس طرح جو افورڈ کر سکتا تھا وہ یہاں سے نکل گیا. So this became known as mini ہیرا منڈی. جب یہاں پہ شروع کیا ادھر کا تو انہوں نے سیلف سسٹیننگ اپنے ان پہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا, which was in a کوٹھا. ادھر ہم نے ایک اسٹریٹ لے کر اس کے اوپر ایک لرننگ ہب اسٹارٹ کیا, اس کے بعد ایک کمیونٹی کچن بنایا, کرافٹ ہب بنایا, میکرز ہب بن رہا ہے with computers and stuff in it. then ایک ہے there's a health hub پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ساتھ collaboration میں. so وہ ایک چلتا رہا. and then one day I got a call جو ایک صاحب نے کی, اور انہوں نے کہا کہ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ. So that is how he started another center which was in Delhi Gate.
एंड पानी वाला तालाब के पास है. यहाँ पे अक्सर फैमिलीज अगेन मरासियों की हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनमें से ड्रग एडिक्ट्स हैं, बिकॉज वो जो एक तबला सरंगी नाच गाने का कल्चर था that has finished, उस वैक्यूम को किसी और चीज ने fill in नहीं किया. So it's either prostitution, trafficking of women or drugs. और मेरे ख्याल ये गढ़ हैं ड्रग्स के, if I'm not wrong. Drugs तो you name it. उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी. We have got a students council. एक president है और हमारे ministers हैं. आपकी आवाज टूट गई. Can you come back? आपकी आवाज टूट गई. मैं ये कह रही थी कि हमारी कहाँ से टूटी? आप कहने लगे हमारी स्टूडेंट काउंसिल, आपने कहना ना, बस उसके बाद फिर टूट गई. स्टूडेंट काउंसिल है, so we take advice even from a 6-year-old. ये वाली जो काउंसिल है इसमें जो अच्छा ठीक है, फिर रख दो, बच्चों को देते हैं. ठीक नहीं थैंक यू. So जी, स्टूडेंट काउंसिल से शुरू करें. Where was I now? I lost. Just start from council है और डिस्कशन उनसे डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने हमें बहुत एनलाइटन किया. एंड दिस इज 10-year-old 12-year-old kids. अब वो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स थी, पूरी रेंज उन्होंने बताई, जिसमें शराब भी है लो क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की. वोडका वाज द नेम यूज्ड, कि वो भी मिलती है. आइस है, वो जो हेरोइन है, कोकेन है, चर्स है, वीड है. ये बच्चों ने नाम सारे लिए थे. नॉर्मल वाले सिगरेट हैं, भरे हुए सिगरेट हैं, इंजेक्शन में डाल के जो ड्रग्स लेते हैं वो हैं. और इंजेक्शन में ड्रग्स जो है वो तो हमारी स्ट्रीट में भी एक आध दफा किसी ने हमारे सामने ही ले रहा था, तो वी काइंड ऑफ स्टॉप्ड हिम. अभी वो इंजेक्शन में डाल रहा था तो वो अपने साथ बाकी चर्सी और उनको ले आया. एंड जब हमने कहा कि यहाँ पे बच्चे हैं, तो आगे से उसका जवाब ये था, मैं केड़ा नशा कर रहा सी, मैं तो सिर्फ सिरिंज भर रहा सी. So that's the kind we said, okay fine, but try कि आप लोग यहाँ ना करें. But अभी अब ये हुआ है कि ये बच्चों से फीडबैक आया था, और हमारे पास कोई, हमने 4 लोग थे जो हमारी कंसंट्रेशन बच्चों पे है. सो उन्होंने उनके रेफरेंस से 4 लोग थे. एक बच्चे के चाचा हैं, एक बच्ची है 4 साल की, उसका 19 साल का बाप है जो नशा करता है. एक और है, उसके दोनों बच्चे हमारे पास आते हैं, वो भी नशा करते हैं, उसका बाप जो है. और जब हमने इनका टेस्ट करवाया, there were about 4 people, चारों जो थे, all of them were AIDS positive. अच्छा, जो बाप थे ये घर में सिरिंज पड़ी होती है, they are all at risk. और हमें पता है, मतलब कहाँ से मिलती है, सारा कुछ पता है. even as you and I are talking, बाकी सब कुछ तो कोरोना से बंद होगा, लेकिन वो सिरिंज चल रही होगी. और अभी भी कोई ना कोई एक बंदा एडिक्शन की तरफ जा रहा होगा. कल मुझे हमारे स्कूल के बच्चे की वीडियो भेजते हैं, वो भी स्टिल कनेक्टेड विद देम, तो ऊपर वो अपना सबक पढ़ रहा था. तो उसकी माँ से मेरी बात हुई, मैंने कहा अब इसके चाचा ठीक हो गए, कहते नहीं अब वो सिरिंज तो नहीं ला रहे, पर थल्ले बैग के सिगरेट पी रहे ने परे वाले थी. फिर मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा तू भाई पाल ले या बच्चा पाल ले, तो एक काम कर दोनों में से. So that is the way it is. It's not इसके ऊपर अगर बात करने लगे, it's going to take days. So you have to keep me focused because मैं ये चाहूंगा कि from your experience 2 things. Okay, हम experience को फिर भी डिस्कस करते रहेंगे, स्पेशली इस वक्त जो ये आपकी वहाँ पर आप इस वक्त, मैं समराइज करता हूँ, आप यू आर रनिंग 2 schools over there in those 2 areas, एक कंजरों का, एक मरासी के एरिया. जी ना हो जाए इसलिए नहीं, कोरोना इसके थ्रू अंदर नहीं आता, फिक्र ना करें. It's in you. You never know, you know. It's mutated. It may mutate further. टेक्नोलॉजी. ओके, तो मैं समराइज करता कि आपके 2 टेक्नोलॉजी से भी हो फिर कोरोना, आपको क्या पता. जी, एक आपका स्कूल है वो कंजरों के लिए है, एक मरासियों के लिए है, और उसके अलावा वहाँ पर आप उनकी हेल्थ सर्विसेज पे काम कर रही हैं, आप उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रही हैं.
یہ ساری جو ہے ایک قسم کی ابھی تک ہماری سمری ہے, اور جس میں آف کورس ہمارے پاس ڈرگز بھی ہیں, پروسٹیوشن بھی ہے, بہت سارے مسائل اس کے علاوہ ہیں. Now my question to you is, ایک جسٹ ایک ہمارا لرننگ ہب یاسین گلگت بلتستان میں بھی ہے, وہ مدرسہ ہے جس کو ہم وہاں پہ کریکولم میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. سوری آپ کی آواز ٹوٹ گئی تھی, کیا گلگت بلتستان میں کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہمارا لرننگ ہب بالکل ایک اور کیٹیگری میں ہے, وہ یاسین میں ہے, گلگت بلتستان میں ایک مدرسہ ہے جس میں ہم نارمل کریکولم بھی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس والی جگہ کو یاسین کو ویلی آف دا شہدا بھی کہا جاتا ہے. سو کافی ڈائیورسٹی ہے ان دی ورک دیٹ وی ڈو. اوکے, تو یہ جو یہاں پر جو اسکول ہے اس کے تو ٹائمنگ 8 بجے بچوں کو کیسے اٹھاتی ہیں آپ؟ نہیں 8 بجے بچوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہی تو میں نے اس لیے پوچھا آپ سے. ہماری جسارت اتنی, ہماری بساط کہ ہم بچوں کو اتنی جرات کریں کہ ان کو ہم تو معذرت کر کے ان سے کہتے ہیں کہ جی بچے لینے آ گئے ہیں, بھیج دیں پلیز. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ایک عورت آئی میرے پاس, تو ہمارا اسکول ویسے بات ہوئے شروع میں 12 بجے لگتا تھا اور اب ہم 10 بجے تک آ گئے ہیں. تو ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے کہ اسکول تے نہیں میں بھیج سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں بھیج سکتی, تو کہ انی سویرے میں نہیں بھیج سکتی. میں نے کہا 1 بجے تو بھیج رہا سی بچے نو, تے انی سویرے ہی ہوئے نا. So for them and then it starts, اب بچے اتنے انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ خود اسکول آتے ہیں, وہ اپنی ماؤں کا انتظار نہیں کرتے اٹھنے کا, ان کو انٹرسٹ ہے اسکول آنے کا, تو اس لیے وہ آتے ہیں. اٹس ناٹ ایون اے اسکول, وی کال اٹ اے ہاف وے ہوم. ہم ان کو مین اسٹریم کریں گے اس وقت جب وہ اپنا خیال خود رکھ سکیں. I believe in the public school system. I do not believe in setting up schools left, right and center. تو بیسیکلی ہم جب تک ان کو تیار نہیں کر دیتے to go into mainstream schools, ہم تب تک ان کو رکھیں گے. Then this center will be turned into a library and a community center, جس طرح کینیڈا میں یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے. سو تب یہ بچے صبح 8 بجے اسکول جائیں گے, اس کے بعد اسکول سے فارغ ہو کے ہمارے پاس کھانا کھائیں گے کمیونٹی کچن میں, اس کے بعد لائبریری میک صاحب چیزیں سیکھیں گے. ہمارا ایم یہ ہے کہ بائی گریڈ 5 یہ سارے بچے جو ہیں ان کو کوکنگ آتی ہو, اسٹچنگ آتی ہو, الیکٹریشین کا کورس کیا ہو, پلمبنگ آتی ہو, کارپینٹری آتی ہو. So by grade 5 they should have all these skills, they should have basic literacy, they should be able to go out into the world and they should be able to get up in the morning. لیکن میرا کوسچن پھر آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ if you want to send them to the mainstream schools, do you think they'll be able to cope with the taboos they're going to carry with them? Who am I to say کہ وہ کر سکیں گے؟ اگر as of now whatever ہم کسی نے یہی مجھ سے سوال پوچھا تھا, میں کہا پھر دسو کی کرا آگے چلو کہ اگر یہ ٹیبوز کے ساتھ لفٹ کریں گے. اور sorry آپ کو میں روکوں گا یار. the reason I mentioned this thing is for two things. Number one, are we preparing them to face those taboos? That's my first question. Are we working on their mental strength so they are able to say کہ یار I don't care, کہندے رہو جو کہنا ہے, تہاڈی مرضی, ٹھیک ہے. Number two, are we going to the schools you're going to partner with, are we going to educate the kids and schools and parents of those school kids over there? I mean, this is something in the plan or it's not something on the cards yet? Number one, yes, we do have psychologists on board. Okay. And we are trying to figure out, دیکھیں 2 آپشنز ہیں. جو پہلے ایکسرسائز ایک خاتون جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کبھی بھی اسکول میں بتایا ہی نہیں کہ میں کس علاقے سے ہوں. سو ایک تو وہ ٹوٹلی ہائڈ اٹ اینڈ یو گو اہیڈ ود یور لائف, which is normal, okay, which is if they want to do it, we're not going to stop it. But the other option is کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس علاقے سے ہیں, اور success is something جس میں آپ کی عزت ہوگی. اور ہمیں ایک اور بھی ہمارا جو ہے کہ انگریزی بول دو تو آپ جو مرضی کرتے پھرو, اگر it's not going to people automatically are going to, پھر ایک وہ ایڈوانس ہو جاتا ہے یار اس علاقے دے پر دیکھو انگریزی کی نہیں چنگی بولتے. So there are ways to work around it, but number one, yes, we will have psychologists on board. Number two, in our experience we have seen کہ یہی گلی ہے جہاں پر دوسری فیملیز کے بھی لوگ رہ رہے ہیں. ہمارے لیے ہے کہ ہم انٹریکٹ ان سے کیسے کرتے ہیں. The problem is with us. ان کے ساتھ جب وہ وہاں پہ وہی لوگ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, ایک کاری کا بچہ ہے اور ایک ناچنے والی کا ہے, یہ فرینڈز, یہ ہماری کوئی ایشوز ہیں اس لوکیلٹی میں, یہ پرابلمز اس طرح کی نہیں ہے. They've been friends since they were kids.
एक बच्चे ने ये कहा, वो नेस्ले में अब काम करता है, कहते जी हमें यही पता था कि जब मैं उसके घर जाता था छोटा होता था तो वो कह देते थे कि वो शरीफा ने मुंडा आया है. So that was the distinction. That's a good one. इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लॉन्ग रन में why can't you say that, and I believe ये बच्चे जो है ना, they are that confident. हम we have to unlearn जो भी हमने किताबों में पढ़ा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, जो कुछ लिखा गया है, just have to forget that and move on, because ये बच्चे will grow up if they are skilled, they can earn a living and they are educated, they will make their own name. आप देखेंगे आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते. So which is an unfortunate dilemma. Yeah, but if you are successful, people will respect you. And that is from where your confidence will come. So एक ये है, दूसरा obviously हम religious instructions भी दे रहे हैं. If because of our intervention, लेकिन जब भी आप intervene करते हैं उसकी cost होती है, price होती है. It's not easy to go and intervene anywhere, not knowing कि उसकी cost क्या होगी. एक cost which is I'm most fearful of, वो ये है कि कल को किसी बच्चे ने उठ के कह दिया कि अम्मा तू ते काम गलत कर दिया तो मैं ते तेरी शक्ल नहीं देखनी. That is not something we want happening. We want them to respect their mothers. जाहिर है अल्लाह ने ये कहा है कि वो कुछ सुन्नत और उसके खिलाफ कहीं तो उस पे चलो ना, लेकिन उनकी इज्जत करना बिल्कुल लाजिम है. So हमने religious instructions का भी component रखा है. Worst case scenario में we will take care of these women, despite कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई बच्चा accept नहीं करता, तो वो तो अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो और वजूहात की बिना पर अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So एक ये हो गया. Your second point was, so we are taking coming to that, we are doing psychological intervention, we are giving instructions on morality. But that is what you're giving to these kids. How about the schools that the kids are going to join? सारी जो जितनी भी है, अब अगर आप देखें जो बच्चे हमारे पास volunteers आ रहे हैं, as I said before, I don't think any one of them would be able to see dancing woman again. I'm sorry, I'm infringing on their business. कि उनका मैं business खराब कर रही हूँ future generations के लिए, लेकिन मुजरा नहीं देख पाएंगे वो, because they know कि इन लोगों के बच्चे हैं. So वो अब जब ये young generation जब वहाँ पर आई है and they have met them, they have realized कि ये तो आम इंसान है, इसने भी घर की रोटी करनी है, इसकी माँ बूढ़ी है, किसी को पैरालिसिस है. ये आपने इतनी आ रहा है. सॉरी अभी मैं बात काट दी, मुझे एकदम पॉइंट याद आ गई. आपने इतनी जबरदस्त बात की है कि हम लोग सारी दुनिया परेशान है हमारे यूथ के लिए. यूथ हमारे यूथ में इस वक्त इन चीज़ों की अवेयरनेस इतनी है कि हम इंसान को इंसान समझने की कोशिश करें, हम आम कपड़ा पहनने की कोशिश करें, हम इंसान ह्यूमन बनने की कोशिश करें, नॉर्मल रहने की कोशिश. तो हमारा यूथ इस मामले में आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल when it comes to the humanity of our youth. Hats off to our youth, because शायद हम लोग उस उम्र में उन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं थे. बिल्कुल. जिस तरह का रिस्पांस मुझे यंग लोगों से मिलता है when they come to that area, इतने नॉर्मल और इतने नेचुरल होते हैं वो बच्चों के साथ, इतने आराम से वो उन बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि I'm surprised कि इतनी जल्दी इनमें, and it's totally something from inside, it's natural. वो कोई they're not acting, it's not to put on a Facebook post or whatever, they're just doing it out of the goodness of their heart. अभी आजकल की सिचुएशन है कोरोना की, इसमें आप उन लोगों की प्रोटेक्शन का कोई आप लोगों ने सिस्टम कोई बनाया है, कोई सोचा है कि क्या होगा? बिकॉज ये तो वो लोग उन लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का शायद आइडिया भी नहीं होगा बेचारों को. नहीं, आइडिया तो अब हर एक को बहुत है, इतनी अवेयरनेस हो गई है कि everyone is fully aware, but क्योंकि हम एक closed community में काम कर रहे हैं, we know the families, और हमारी intervention है उन families में. देखिए हमने एक tiered approach रखी थी. First and foremost was कि उन सब families को राशन पहुंच जाए. ठीक है. So that was provided to all the families. Starting from the 1st of April, we wanted to know कि किन के रेंट नहीं पे हो रहे, किन के यूटिलिटी बिल्स नहीं पे हो रहे, किन की महीने की मेडिसिन है जो नहीं आ रही, वो उसको एड्रेस किया. अब नेक्स्ट इज कि जिनको हमने कुछ काम कारोबार करने के लिए लोन्स दिलवाए हैं और वो कोरोना से इफेक्ट हुए हैं, उनको हम कर्जे हंसना की सूरत में ही
मजीद लोन देके ताकि उनकी किस्तें हम उनकी उतार दें. इस सारे के अलावा एक पेरेंट्स के साथ हमारा टोटल कनेक्शन और बच्चों के साथ है. वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं. उसका एक पूरा डेली स्केड्यूल होता है. आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पहले तो एक प्रिंसिपल का मैसेज होता है बहुत प्यारा सा कनेक्टेड सा. उसके बाद हमारे जो फाइनेंस मैनेजर हैं वो बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ के सुनाते हैं. आफ्टर दैट हमारे जो एक क्लासेस शुरू होती हैं, कुछ क्लासेस डाउनलोड नहीं. उसके बाद हमारी साइकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चों को एक्सरसाइज वीडियो और उसके टिप्स देती है. देन वी हैव क्लासेस जो ऑनलाइन भी होती हैं और कुछ डाउनलोडेड होती हैं. आफ्टर दैट हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ऑल्सो टूरिज्म ऑफिसर विद वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी जावेद साहब, वो एक वर्चुअल टूर लाहौर का देते हैं. कोई ना कोई मॉन्यूमेंट, स्टार्टिंग द मॉन्यूमेंट्स जो बच्चों के करीब है. आफ्टर दैट देयर इज होमवर्क टाइम. जो हमारे सोशल मोबिलाइजर्स जो हैं, टीचर्स वो होमवर्क लिखती हैं. सो द सोशल मोबिलाइजर्स पिक इट अप एंड सेंड इट टू द किड्स एंड देन टेक इट फ्रॉम देम. एंड इन द एंड वी हैव अ बेड टाइम स्टोरी जो हमारे डिफरेंट स्टोरी टेलर्स हमें भेजते हैं. सो आई थिंक जब स्कूल जा रहे थे तो हम इतने कनेक्टेड नहीं थे, और कुछ ना कुछ हम उनको जो स्टोरी टाइम है उसके एंड में, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उस वक्त मैक्सिमम होगा. और इवन फैमिली सुन रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, कोई पंजाबी में सुनाता है. उस स्टोरी टाइम में वो स्टोरी टेलर एट द एंड एक मैसेज दे देती है व्हिच इज रिलेटेड टू कोरोना, whether it's washing hands, whether it's staying indoors. अब हुआ क्या है कि instead of वो cough corona का is clubbed with a interesting fun story. So वो मैसेज कन्वे भी हो जाता है, and it is not कि सारा वक्त आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं. तो all these families are very well aware and they are looking after themselves. Community kitchen हमने बंद करना पड़ा था हमें obviously. रमजान में we do intend to open it just for 2 people जो कि वहाँ पे कुकिंग करेंगे. और सहरी इफ्तारी जो है, because पिछले 2 रमजान से we used to invite everyone to it. अब ये है कि उनके घरों में पहुँचाएंगे. मैं आपके जो स्टोरी टेलिंग का जो आपने आइडिया दिया ना, ये इतना जबरदस्त है, बिकॉज आई थिंक दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी हाउस होल्ड एनीवेज. के बिकॉज आई टीच हाउ टू टेल, यू नो, आई कॉल माई सेल्फ अ स्टोरी टेलर. मेरी जितनी भी सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, चलिए अब एक तो आप स्टोरी भेज रहे हैं हमारे बच्चों के लिए. ठीक है जी, भेज देते हैं इंशाल्लाह. तो वो उसमें मेरा जो एक स्पेसिफिक चीज मैं सिखाता हूँ, बिकॉज जो स्टोरी टेलर एज टेलिंग एज एन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली इज डिमिनिश्ड, इज फिनिश्ड, इनफैक्ट नॉट इवन डिमिनिश्ड, इज फिनिश्ड. और उसमें बता दूं कि स्टोरी टेलिंग में सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि वी एंड द स्टोरी विद अ मॉरल. स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि यू नेवर पुट अ मॉरल टू द स्टोरी, बिकॉज़ एवरी माइंड, एवरी ब्रेन विल हैव इट्स ओन मॉरल, इट्स ओन वे ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द थिंग. तो वो स्टोरी टेलिंग के एंड में अगर आप ये चीजें, इस तरह के मैसेजेस सबलिमिनली ऐड कर रहे हैं ना, दैट एक्चुअली हैज द बेटर इम्पैक्ट. और कोरोना का जो खौफ जिसका आपने जिक्र किया, खौफ, क्योंकि कोरोना से हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है. तो कैसे लड़ना है भाई, डराई तो आप जा रहे हैं, राइट? सो वो इसलिए आई थिंक आई लव दिस कॉन्सेप्ट, और मैं इसको अपनी नेक्स्ट जो मेरी कोरोना वीडियोस है उनमें ऐड करूंगा. इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊं, बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या. द कॉन्सेप्ट इज अ बेड टाइम स्टोरी इज द बर्थराइट ऑफ एवरी चाइल्ड. So every night these children have been denied a story. Let's all of us make up for it. That is a basic concept. So what we are doing is we are making a jukebox of stories. So you press the jukebox button once we have the app ready, and if there's any volunteer who would like to program it, we would love that. So you just push the button and it opens onto a storyteller. So on one side you would have jo unhone stories sunai hai. On the other side you have the reflection of the children, which comes to us in the form of drawings, in form of messages, and several such things jiske through wo hame. So you'll have the reflections and you'll have the storyteller's story in that jukebox, and you can play those stories again and again. Excellent. And ek interest, what was I was surprised to notice was ke wo माएं जिन्होंने कभी बच्चों के साथ उस तरह से वक्त नहीं गुजारा, वो बैठ के कहानी सुन रहे हैं. So we wanted to use it as a technique which is called bibliotherapy. बाहर तो एक्चुअली अब किताबें प्रिस्क्राइब की जाती हैं और प्रिस्क्रिप्शन से. बिब्लियोथेरेपी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन रेफ्यूजी कैंप्स, और इस वक्त हम सभी एक रेफ्यूजी कैंप बन गए. बिल्कुल, so whole world is a I thought why don't we apply that, and we're getting a very good response from the children.
So I think everyone should use this technique. क्योंकि आपने कोई भी जिस तरह आपने कहा कि हम कोई मॉरल सिखाने के लिए नहीं बैठे हुए, स्टोरी टेलिंग हैज टू बी फन, वो एक इस तरह से ऐड करो कि किसी को रियलाइज ना हो, और बेसिकली आप बिल्ड अप करते हो पॉजिटिव एसोसिएशंस. My passion is making libraries and learning spaces, so I can. मेरा जो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली ये था कि आप उसको क्लब करो with a positive feeling, so that trigger invokes that positive imagery in your mind, and stories and the message are associated, so वो message की effectivity ज़्यादा होती. That's ये excellent. मैं आपके साथ तो गप्पे लगाते हुए जो है ना वो पता भी नहीं चल रहा, और हम और 2 घंटे भी बोल सकते हैं, इतने जबरदस्त आपका वो टॉपिक है. मैं 2 चीजें यहाँ पर चाहूँगा. एक तो ये कि ऐसी कोई भी इनिशिएटिव अगर सेल्फ सस्टेनेबल या डोनर सस्टेनेबल भी ना हो तो वो चल नहीं सकता ज़्यादा देर. So of course you need funds. You can't put it from your pocket all the time. So question number 1, do you have any self-sustainable model, or is it only donor based, and how do you get your donors? So people who are listening and somebody wants to contribute, how can they get in touch with you? It is both. Now the first is obviously the funding part. Akhwat and Dr. Amjad Saqib have been very kind. उन्होंने हमें एक dedicated account और एक portal दे दिया है. So anyone can go to that portal and go to that account, and he can or she can like donate the amount into it. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि you sponsor a child. Sponsorship of a child is 5,000 a month. So उसमें we take care of the health, education and everything related to the child. So ये दूसरा. So that is where our funding comes in. कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो हमें महीने का ज़्यादा अमाउंट देके कुछ जो मेजर एक्सपेंसेस हैं हमारे वो करती हैं. अमंग आवर डोनर्स बहुत सी सेलिब्रिटीज भी हैं, क्योंकि हमजा अब्बासी स्पॉन्सर्स 11 चिल्ड्रन. Ali Zafar Foundation, Ali Zafar often comes here and he supports the children. उमेर जसवाल और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बिलाल लाशारी, they all supporting and sponsoring kids. So उनके थ्रू हमारी sponsorship आती है. So that is your funding model. Now coming to the sustainability model. Sustainability model में ये है कि हमने जो craft hub बनाया है या उनको जो skills सिखा रहे हैं, we hope, जैसे हमने अड्डा वालों के लिए जो मरासी families हैं उन्होंने अड्डे का काम भी सीखा हुआ है. So we have got अड्डा work, we had it going there. फिर वहाँ पे जो कोई टेलर्स हैं, कोई और भी स्किल बेस्ड हैं, उनको काम करके दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स. और दूसरा आप देखिए ना, बच्चों को हमने अपने पास तो रखना नहीं है, हमने तो उन्हें पब्लिक स्कूल में डाल देना है. सो इवेंचुअली हमारा सक्सेस का वो ये होगा कि पीपल विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम हियर. और जहाँ तक कम्युनिटी किचन का ताल्लुक है, वी आर डूइंग अ सर्वे हम कि कितने लोगों को राशन जाएंगे. उस we are working, just to tell you in a nutshell, हमको we are going for quality rather than quantity, and a model which is replicable and can be done anywhere else. So we have got UC number 53, ward number 3 for instance. अब ward number 3 में we do a survey जो अभी शुरू भी हो गया, और एक ट्रांसजेंडर है जो ये सर्वे कर रहा है, उसको भी नौकरी मिल गई है. कितने हाउस होल्ड्स हैं, उसके कितने मेंबर्स हैं, क्या प्रोफेशंस हैं, कौन ड्रग एडिक्ट्स हैं, कौन नहीं है, ये डेटा हमारे पास होगा, क्योंकि डेटा तो फिलहाल है ही नहीं कोई. वंस वी हैव दिस, तो वहाँ पे हम 3 कैटेगरीज में, अब मैं सिर्फ खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, इससे और भी बहुत चीजें हम कर रहे हैं इस डेटा से, लेकिन उसमें 3 कैटेगरीज होंगी. एक वो फैमिलीज जो अफोर्ड कर सकती हैं, एक वो फैमिलीज जो मिड रेंज की हैं, और एक बिल्कुल ही नहीं कर सकती. सो इफ यू प्रोवाइड राशंस एंड फूड ओवर देयर, जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं उनकी वजह से वी सब्सिडाइज द फैमिलीज जो नहीं अफोर्ड कर सकती. सो मॉडल्स इतने ज्यादा हैं दुनिया में कि there is no end to it. आपने सिर्फ उनको कॉपी करना है. जैसे सुल्तान शोएब साहब ने कहा था कि एक दफा वो जो उनके सीनियर थे, उनको उन्होंने जब प्रोजेक्ट दिया था तो उन्होंने कहा आगे से कि are you a scientist? उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा are you an inventor? He said no. He said then be a copycat. तो जो चीजें हो चुकी हैं, there is no need to reinvent the wheel. जो चीजें हो चुकी हैं, let's work on them. And then फिर हम एक और चीज जो करें, हम अखवत से माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिलवा रहे हैं. किसी ने रेडी लगाई है, कोई एक है, 3 फैमिलीज हैं, वो ये टाइज और शर्ट्स लंडे से लेकर उनको रिफर्बिश करके दे सेल इट टू बैंकर्स. सो काम है वहां पर. वी आर गोइंग टू मेक द फैमिली सेल्फ सस्टेनेबल. मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है इसके ऊपर के, इज दिस एफर्ट Zerqa based or is it
going to be an effort if Zerqa moves out from this thing, also it can sustain? Or is it only one person based at the moment? It's based on 122 kids and their effort. It's up to them. आपको मैं सिर्फ we'll wind it up. I'll just tell you 2 incidents which will be an eye opener. एक बच्चा 12 साल का है, वो सिगरेट पीना शुरू हो गया था. उसकी माँ ने हमें कहा, we started business management classes for him. उसने हमें आकर ये कहा एक दिन कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरा बाप कैसे कहता है कि कमाई नहीं हो सकती. अगर आप कमाना चाहो तो आप कमा सकते हो. Then he went, he did a part-time job, he brought 300 rupees और उसने कहा ये मैंने कमाया है. Our finance manager जो है, he sat with him and opened एक गल्ला लेके opened a saving account and put the money in it, 30 rupees out of those 300. That kid is going to lead this project. Other than that, हमारी जो बच्चियां हैं, उन्होंने एक ओल्ड होम है मेयो हॉस्पिटल में, उसके बुजुर्ग हमारे पास आए थे और हमारे बच्चों ने उनको एज ग्रैंड पेरेंट्स अडॉप्ट किया है. सो आई हैव दिस अडोरेबल पिक्चर, एक शख्स की, जिसके एक बुजुर्ग की जिसके बेटे ने उसको अबैंडन किया था, और एक बच्चे की जिसके बाप ने उसको अबैंडन किया था, और उस बच्चे ने उनको एक मिसिंग रिलेशनशिप है उनमें जो दादे की है. Because there's no father, so there's no grandfather from the father's side. So वो bond अब ये इन बच्चों ने develop किया है. और मैंने इनसे पूछा कि बच्चे क्या करना चाहिए. They are the ones who advised us कि इनको हम अपने नाना नानी दादा दादी बना लेते हैं. मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है. फिर आप क्या करोगे? फिर हम उनके लिए चीजें लेके जाएंगे. कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा हम गल्ले में पैसे जमा करेंगे. So I'm not going to lead it. You're not going to lead it. No one is going to lead it. These kids will lead it. Excellent जी, excellent. मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर आई वाइंड अप ऑफिशियली कि एक तो आप मेरे साथ वो पिक्चर्स वगैरह कुछ शेयर कीजिएगा जो मैं यहाँ पर ऑडियंस के साथ कोई कोलाज बना लेंगे, और दूसरा आपका जो अकाउंट नंबर या जो भी कोई डिटेल्स हैं ताकि वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ और नीचे उसको हम चलाते रहेंगे. तो इट वाज रियली एन आई ओपनर. इट वाज समथिंग व्हिच आई थिंक वी ऑल नीड टू लुक एट एंड थिंक अबाउट इट कि इस माशरे में हम हर बंदा अगर अपना कोई एक पार्ट ले ले और उसका काम करने लग जाए तो वही इतना बड़ा है कि हम लोगों को हमें इस माशरे को रीबिल्ड करने के लिए, चाहे जिस तरह ज़रका कर रही हैं, जिस तरह और लोग डिफरेंट जगहों पर काम कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो कंबाइन हैंड्स एंड यू नो जॉइन हैंड्स एंड डू समथिंग टुगेदर एज वेल, जिसमें मैं चाहूँगा कि जी जहाँ पर मेरी जो एक्सपर्टीज आप लोगों को चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर. Just I think you already sponsor a child. Your mother does. जी वो my mother does and वो उन्हीं का है. मतलब मैं तो अपने मैं तो बता दूं. जी जी मुझे पता है. मैं आपको बता दूं. सो आपका एक भाई है जो कि कुछ अर्सा पहले दाता साहब के बाहर पेवमेंट पे सोता था और कल उसने अपनी पढ़ते हुए अपनी वीडियोस भेजी है. We've shifted them thanks to I'm telling this to you thanks to your mother. We have shifted them to a house and they are living there very comfortably. He is studying. Their rent is paid thanks to you again. Or again, that is another child I have great hopes and expectations of because uske sath bahut si duaएं भी शामिल हैं. बिल्कुल इंशाल्लाह मैं with your permission मैं ये वाला कार्ड दूंगा because I don't like my things to be displayed. But I had to tell you. I had to tell you this. And you know that kid is अब कार्ड दे, हम ये रिकॉर्ड ना करें. This is just between you and me. जी जी मैं एक बार फिर हम सलाम कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं. ओके तो ठीक है जी, ख़वातीन के साथ हम इजाज़त लेते हैं. थैंक यू वेरी मच ज़रका, आपने हमारे साथ इतना ज़बरदस्त नॉलेज शेयर किया. एंड आई कैन ओनली से वन थिंग कि अल्लाह ताला ये आपको इसकी जज़ाए खैर देगा जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत शुक्रिया.